Everyone, it is with great pleasure that I welcome you all on behalf of the Department of Commerce, Kristu Jayanti College, Bangalore, for today's Faculty Development Program session. We are especially honored to welcome our distinguished resource person, Professor Dr. S.M. Khan from Aligarh University, Uttar Pradesh. Sir, we are truly privileged to have you with us. Your vast experience and expertise in the field of statistics has really been regarded, and we are excited to gain more deeper insights from your session today, sir. We also would like to extend a warm welcome to our respected HOD, program coordinator, FDP coordinators, faculty members, and other enthusiastic participants. Let's look forward to an insightful and engaging session without much delay. Over to you, sir. Thank you so much. Actually, sometimes there may be a connection issue. So I dropped my number in the chat box. You can call me back so I can have the alternate arrangement for the class. Yes, sir. Sure, sir. We will take care of it. Some issues होते हैं. How are you, Vijay sir? Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Please allow me to share the presentation. I'm getting the warning. Host isn't allowing you to share the meeting. Sir, just a second, sir. We are just calling. Do I log in again? Sir, have you already go over, sir? You can be able to share. Sir, you can hear me, sir? My screen visible to you? Yes, sir, we can. Fine. Sorry. Friends, welcome the third day. I hope I met your expectations. Some very important topics are to be covered in days to come. Hopefully, by completion of this session, we will be able to develop the foundation or overview of JAMOVI, how to use it, how to prepare your data. Now, computation today, we will start a little bit. So this last day, friends, we were able to create the new data file and edit the data, variable types also. Some of the transformations that I will also repeat today. How to handle the missing data, creating new variables, and recording. This part again I will repeat. Descriptive statistics and summarization. And third one, conditional analysis. This part I will repeat. So 3 points, especially transformations, recording, and conditional analysis. However, I discussed yesterday about the filters. Okay. Today, friends, you will be able to compute descriptive statistics and data visualization, measures of central tendency and variability, computation, compute new variable,
you need to sum number of variables all together to create the composite score, compute new variables. And also you can use n number of functions and formulas to calculate the value of the variable. Transform, again, very important. We know about frequency distribution little bit, discuss about the output management, creating graphs, and customizing visualization for research report. As you know, these slides I will try to skip. I believe in hands-on practice much. Friends, for a statistics, this is very important. We must know the central location of the data set, central tendency about your data. And the popular measures of the central tendency are mean, median, mode. This knowledge is very important, friends, when you are planning to use parametric statistical test. And this is one of the assumptions. All three measures of central tendency are identical. Mean equal to median is equal to mode. Then only you can use the parametric test. How to compute this central tendency? We will go to the analysis, exploration, and descriptive statistics. Fine. And results appear instantly in the output panel. You have seen it. Second point, friends, a large number of decisions cannot be made on the basis of mean only or central tendency. For example, if I say the mean height of students in my class is 140 centimeter, mean height, average height, then this is incomplete information. It is only guiding about the central location of the mean, not about the variability. This information is not helping me how much the values are varying altogether. Varying means what is the minimum value and what is the maximum value. Of course, there are n number of values to compute the mean. So variability is very important to make a decision. There may be n number of cases. For example, if you are planning to go for mutual funds, we used to study. Of course, using in this MF, I am getting the advantage. But how much it has been fluctuating over the years or months or weeks, then only you can take a decision. So variability, again, very important for any decision relating to the statistics. And same method, analysis, exploration, and descriptive statistics. N number of measures are there: range, variance, standard deviation, and interquartile range. If you call back to the my earlier classes, I discussed the statistics can be divided in two parts in general: descriptive and inferential. So when we are computing measures of central tendency and variability, we are simply trying to summarize our data set. To knowing about the data set. If this knowledge is clear, then only you can move to inferential statistics. For example, if one of the applicant applied for a job in your institution, so his application, his enclosures are as the summarization or visualization about his applicant, his candidature.
So this is again very important. The summarization or visualization is very important. Basic statistics, basic step for making the decision. If measures of central tendency and variability are not as per standards, then decision taken on the basis of the data set will be misleading. सब स्टैटिस्टिक्स ने ये बताया था, स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट ऐसा आया. No, this cannot be an excuse. Okay. When you are dealing with the quantitative data, these are the different methods. Standard deviation is the best for the normal data. If you look into the NPC, normal probability curve, the complete curve is divided on the basis of two parameters. One is mean and another is standard deviation, measures of variability. Why you use both? Now see, this is the example that this case I wish to discuss with you. Central tendency alone does not show data spread. Variability, it's difficult to know about the variability. Variability helps understand consistency vis-a-vis dispersion. आप देखिए, these are the two measures. Mean of the data set is 50 and another data set is also 50. So you can say the measures of the central tendency or the central location of the data set is same. Or you can say the section A and section B. Both are performing equally. But the variability in the both cases cannot be same. In section A, there may be high performer, majority of the cases. But in section B, few are poor performer, few are mediocres, and few are high performer. So this variability is very important. Of course, we will work on the section in which the variability is high. वहाँ पे poor performer भी हैं, mediocre भी हैं और high performer भी हैं. So these two measures help you to make a decision about the nature of the data set. So please, whenever you are making a decision on the basis of central tendency, on the basis of descriptive statistics, then you need to complete these two parameters. We know frequency distribution and analysis, exploration, fine. And interpretation also, you know, in the frequency we are getting the count, percentage, and cumulative also. And we can also create n number of charts also. Why we use graphs, that you all are familiar, that we can how to access graphs. These are in analysis, exploration, descriptives, and within the descriptives, plots are there. N number of plots, beautiful plots are there. Creating a histogram. Again, this is, you need to go to the plots. Creating a box plot, you need to go to plots. All the plots are under this analysis, exploration, and descriptives. Fine. Bar charts and scatter plots. Histogram we use to compute when the data is continuous in nature. It may be with inclusive and exclusive class intervals also. And box plots to examine the variability of the data set. Okay. Bar chart when the data is nominal or ordinal in scaling, or you can say the categories. And all the categories are mutually exclusive. The difference between the bar chart and histogram is that in bar chart, there is a space between two bars. Reason being that we are having distinct categories.
However, in case of histogram, you are having continuous data set. For example, the class intervals may be 10 to 20, 20 to 30, 30 to 30, 40, and so on. Continuity is there. Scatter plot, friends, we used to examine the correlation when we are planning to compute the correlation. Then scatter plot is the plot which help you to know about the how values are spreading on a continuum, scatter plot. So analysis, regression, and correlations, you will see there. You can export the graphs, or you can copy, or you can save them, save as. Different formats are there for saving the graphs. It may be PNG, it may be SVG, it may be PDF. And you can place it in your reports, presentation, or research papers. Customizing, again, you can edit it, you can see it, you can compare them. If a value is changed, then you can track the trends over the time. You can customize the axes, colors, and labels of the graphs. Smooth lines for the better quality. And export to save the graphs in the high resolution images. Refining visualization of your research report. Again, customization. Best practices for research report. Keep graphs simple, clear, no ambiguity. Excel के जो graphs होते हैं, they are really very not as per the academic standards. Of course, they are beautiful graphs, but it is suggested need to be very simple, very clear, in 2-dimensional only, not 3-dimensional or so on. Uniform formatting, वो नहीं होना चाहिए. You are trying to impress on the basis of this the examiner. Labels and legends are to be clearly defined and readable. And appropriateness of the chart also. And this appropriateness can be decided on the basis of type of data or type of scaling. Right click on the graph to copy paste is directly into your reports. Mouse right click karenge, then you will see copy or export. Fine. So यहाँ तक मैं discuss करता हूँ, then I will again back to this part of the computation. We will go to this JAMOVI. Friends, we will continue with the employee data file. देखिए, the recently used जितनी भी files होती हैं वो यहाँ पर listed होती हैं. Employee data file. Now file is available to you. Employee data file. Fine. So computing the descriptive statistics, you go to the, now see, please keep in mind, these are the 4 options only: variables, data, analysis, and edit. Whenever you are planning to compute anything else, you need to click analysis. And exploration, the first is descriptives. So this is salary beginning, and this is current salary. Now see, the basic statistics for all the 2 measures, 2 variables, salary beginning and salary. This is current salary. The mean beginning salary for the employees in an organization was 17,000, and the current is 34,000. You can make a decision on the basis of this value. And standard deviation,
for the normal distribution of the data set, it is suggested the standard deviation needs to be in or around 1/3 of the mean. See, you can have an idea. When I will be showing you the skewness and so on, 1/3, almost it is a half. Okay. If you are interested to compute these statistics on the basis of gender, then you will split by gender. यहाँ पर देखिए split आ जाएगा. अब देखिए female, male, number of cases, missing none. The mean of the female is this one for the beginning salary and this one for the current salary. So as median, standard deviation and so on. You can go for another type of this is split by, now see, another variable. Now see, female, the descriptive statistics is being computed for the current salary and beginning salary. But the analysis has been split on the basis of two variables. You can split on n number of variables, gender and minority. Now see, mean beginning salary of the employees, those are female and did not belong to the minority is this one. The females, those belong to the minority in case that this is lesser than female. Got it? Now this is the part of policy making. Those are females. They are getting the lesser beginning salary comparing to the other communities. So देखिए इस तरह के डिसीजंस आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलते हैं. कई बार नंबर्स एंड डेटा के बारे को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन you will find really very difficult. So this is the analysis. Fine. Statistics, you need to go to the more statistics. आप इसे क्लिक कर दीजिए. You are having this central tendency. If you are interested, mode. Now you have mode also. Fine. Mean, median and mode. सारी चीजें आपको मिल गई. Okay. If you come to the skewness, is my data is normally distributed or not on the basis of gender or minority? If I say gender, skewness, we will go for the skewness. Just see 1.77 positively skewed. 1.86 again positively skewed. Fine. Please. I'm sorry, एक अर्जेंट कॉल थी. तो इस तरह से you can make the interpretation. अब देखिए some more plots also. Normality. If you are planning to compute the normality of your data set, normality, this, now see, this value 0.715, 0.771.
The range of the Shapiro Wilk W is 0 to 1. Value close to the 1 will guide you. The data is approximately normally distributed. Normally distributed. You can go for the range. Now see, range 70,000, 1,19,000. Range means the maximum value minus minimum value. The peakness of the data, kurtosis, you can go for the kurtosis. 12.4 and 5.5. Peakness, not exactly normal. Fine. So these are, you can also go for the confidence interval also. Now see, 95% confidence interval. Okay, 95. Lower limit and upper limit. This is 95. If you are planning to go for 99, just simply type and you will have 99%. Now see 99% upper limit and lower limit. Got it? This is about the central tendency and variability of the data set. Descriptive statistics. इसी में now you need to go for plots. Now see plots. Histogram. It is for the continuous data set. Now see. Now you need to have an idea about this plot also. देखिए, this data is positively skewed. जो आपको यहाँ से कंफर्म हुआ था पिछले आउटपुट से, skewness, kurtosis देखिए 2.85, positively skewed. When the tail is towards right side, then it is positively skewed. When the tail is towards left side, it is negatively skewed. तो यहाँ से भी कंफर्म होगा कि डेटा आपका skewed है या नॉर्मल है. ओके. बॉक्स प्लॉट वेरिएबिलिटी के लिए. Now see, if it would have been a normal distributed data, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है देखिए यहाँ मिडिल में आना चाहिए था. And these are the outliers. The beauty देखिए आपकी कि if you look into these 4 values, they are the extreme values. Friends, for making a good decision, you need to ensure the homogeneity of the data. आपका data homogeneous होना चाहिए. इस डेटा में देखिए ये 4 डेटा जो हैं बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं. If you look into the 233 and 313, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 233 and 313, it is about beginning salary. Beginning salary देखिए ये है, this is the beginning salary. Fine. And if you go to the this variables and data and analysis, perhaps I just add a variable. We need to sort it. Sorting command must be, I'm not getting it. So I will check it later on whether the sorting is supported in this or not. So, लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ पे देख सकते हैं. देखिए ID number 313. If you look into the ID number 313, now see this is the data. This current salary. Now see 21,300. और देखिए 233. ID number 233. Or you can say the 410. Actually, this data is not sorted. 410. Now see.
This is the data. तो outliers आपको दोनों मिलेंगे, lowest value and highest value also. So it is suggested whenever you are planning to analyze this data for your research report or article or thesis, you need to remove these outliers or the extreme values. And one of the extreme value can make a large difference in your output. So this is one of the analysis that I plan to discuss with you. Descriptives. Now coming block to the plots, box plots. Density plot. Now look into the density. We have not selected the variable density and beginning salary. Now see, just like the smooth curve. आपको देखिए, smooth curve density plot. Okay. If you are planning to go for violin, देखिए, a different type of plot you will find about the variability. See, violin. It will guide you the complete variability of the data set along with the central value of the data set. Yes, PSS वगैरह में ये सारी चीजें नहीं है. You can go for Yes. for Yeah, quarter. sorry for interruption, sir. This is Dr. Sandhya from Christ University. Sir, my question is, when we remove these type of outliers, can we show that in our thesis or in our journal articles? No. Please do not open this chapter. Okay. It is suggested whenever you are working on a data set for the research article or thesis, at least you have 2 or 5% more data comparing to the sample size. Okay. वो इंफॉर्मेशन जो अननेसेसरी देखिए एक चैप्टर ओपन करती है, उसको हम ना रिकॉर्ड करें. We are going with the homogeneity and uniformity of the data set. Okay, sir. और ये मैनिपुलेशन नहीं है. The extreme or outliers may be because of n reasons. अभी मैं I was conducting an experiment in a lab. So we were trying to measure the skin resistance, galvanic skin resistance, GSR. तो इलेक्ट्रोड्स सब्जेक्ट के लगे हुए थे और ASMR हमने दिया था. ASMR is the stimulus which help you to move into the relaxation or mindfulness. So जब उसको साउंड सुनना शुरू हुआ और स्किन रेजिस्टेंस का जब हमने मेजर किया तो इट वाज टू द एक्सट्रीम वैल्यू, जो कि 3 डिजिट्स में होना चाहिए था, उसका 4 डिजिट्स में आ रहा था. तो वो शिवरिंग उसकी हो रही थी. तो हमने पूछा कि सर, आई वॉज अफ्रेड अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट, आई वॉज थिंकिंग कि मुझे करंट ना लग जाए, मुझे ये ना हो जाए वगैरह वगैरह. तो इस तरह का तो केस देखिए, जब हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अपनी रिसर्च में लेते हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को हम नहीं लेंगे अपनी स्टडी में. फाइन मैम. And you can also go for the quartile plots. These are the plots. Yes, sir. Understood. Thank you. These are the plots useful to examine the variability, normality. Now see, if it would have been the normal distribution, so all the points could have been line upon this line in or around. Sometimes देखिए percentiles भी हमें चेक करना होता है. देखिए, you need to write the percentile simply 10, 20, 30, 40, 50 like this and enter करिए. You will have the percentile values in your data table. Now see, 10th percentile, 20th, any of the value. If I am interested to compute, say 58th percentile of the data set. Now this is a 58th percentile. Wonderful application that you can use for n number of analysis. Okay, moving ahead, after this descriptive and variability, now it's the time to compute. Friends, in our research, many times we used to use n number of formulas to compute a new variable.
For example, we are having two measurements, weight and height. If I am interested to compute the BMI, then I will use this formula. Also, we used to categorize scores as a high and low. Various transformations like log, square root, and instantize the data also. And common commands are like this. और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? Computed variable. This I will again discuss with you. Continuing with the same data file. Fine. Same data file. Go to the data. And you are having these two options that I will discuss today, compute and transform. We will go to the compute. When you click the compute, then this new window will be with you. Fine. So, for example, if my cursor is over here, you can say the cursor is here, and or you can say the sum salary. मैं दोनों सैलरीज का सम चाहता हूं. फाइन. बिगनिंग सैलरी एंड करंट सैलरी. तो यहां पे देखिए, यू विल क्लिक दिस एफएक्स. एक्सेल में भी बहुत लोगों ने यही देखा हुआ है, एफएक्स. आप इसे क्लिक करिए. जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नया विंडो खुल जाएगा. और यहां पर बहुत सारे फंक्शंस हैं, अनलिमिटेड फंक्शंस हैं. मीन मुझे कंप्यूट करना है, मिनिमम मैक्सिमम करना है, राउंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत सारी चीजें कई बार हमें कंप्यूट करनी होती हैं फॉर द स्पेसिफिक वेरिएबल. लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, रेफरेंस, मिसलेनियस, सिमुलेशंस, एंड नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस आर देयर. तो मुझे देखिए जैसे सम करना है, तो सम इज वन ऑफ द सम इज देयर. सम. जैसे ही मैंने सम क्लिक किया तो देखिए इसके अंदर एक्सप्रेशन आ गया. आप किस तरह से लिखें? रिटर्न द सम ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स. सम को क्लिक करिए, डबल क्लिक, तो देखिए सम इक्वल टू सम, एंड विद इन ब्रैकेट यू नीड टू सिलेक्ट द वेरिएबल सैलरी. डबल क्लिक करिए, सैलरी आ गया. दूसरा देखिए, डबल क्लिक करिए, बिगनिंग सैलरी आ गया. यहां पे कॉमा आपको देना होगा लाइक दिस. सो ये नया वेरिएबल जो आपका क्रिएट होगा, दिस इज द सम ऑफ टू वैल्यूज. जस्ट फॉर एग्जांपल, if I am willing to compute the percentage, कि स्टूडेंट की परसेंटेज क्या आई. So we are having 5 subjects. We have 5 subjects and divide by grand total and multiplied by 100. You can write this formula over here. Okay. तो आप साइड में क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे ये सारी वैल्यूज फिलअप हो जाएंगी. जैसे आपने क्लिक किया, देखिए ऑल दोनों अनलिमिटेड डेटा सेट होगा आपका. सबके लिए आपकी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट हो गई. कंप्यूट any of the value you can compute, any of the formula you can place over there. अगर फॉर्मूला की सिंटैक्स में कुछ गलती होगी तो it will guide you. There is a problem in the formula. Fine. Or now moving some more, you can also compute this mean. You can also go for the computations also, conditional and standardized also, that we can think for it. Okay. New variable. Let me check the Z. This will come into the transformation, not in this case. And the formula for the Z score is raw score minus mean divided by standard deviation.
this will come into the transformation, not compute. For example, if I am interested to calculate log 10 of salary, अब देखिए यहाँ पे इसको हम चेंज कर देते हैं. देखिए सारी वैल्यूज आ गई. log 10 log नेचुरल वैल्यू कंप्लीट हो गया. Any of the formula you can type here. Only just to keep in mind, आपको इसको क्लिक fx को क्लिक करना होगा तो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे और जो आपके डेटा फाइल में वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे. It's very difficult to memorize the spelling of the variable. So ये यहाँ पे हो गया और simply you double click. You will see the results. Fine. So moving ahead, friends, computation. Then computation के बाद we have this transformation. Create transformation. Standardize the scores. करते हैं सब. देखिए again back to this transform. Okay, you can delete. जिन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हैं, वरना ये फाइल का हिस्सा बने रहेंगे. Necessary it will create the problem to you. Now transform. How to transform? देखिए click it. By default उसने वेरिएबल नाम ले लिया transform. ट्रांसफॉर्म में जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपसे केस डिस्कस करना चाहता हूं कि इन जनरल हमारे जो रिसर्चर की अप्रोच होती है, they used to categorize a continuous variable into the n number of categories. Categorize करना. For example, age of the subject 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50. ये गलत है. It is not a right approach for the researcher. When the original data is categorical in nature, then you are going to lose one of the very important characteristic of your data set. If you are planning to examine the correlation of raw score, for example, age with achievement, you cannot do this. Reason being that you can categorize at the onset only. So it is suggested, please allow to come as a raw score the variables, those are continuous in nature. जिन variables के scores continuous में होते हैं उनको as it is आने दीजिए. For example, your age in years. Let it come. For example, जैसे education हमने ये रखा है as they are. हमने नहीं कहा इनसे कि 12th करिए, 10th करिए या 8th करिए, 16th करिए. Fine. Now it's time to categorize. अब देखिए मैं ये जानना चाहूँ कि 8th क्लास तक के कितने स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एक वेरिएबल है मेरा. अब इसकी मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ. तो फ्रीक्वेंसी के लिए आई विल गो टू द एनालाइज. आई विल कंप्यूट द फ्रीक्वेंसीज and select this education. Now see, this is the frequency. 8 से लेके 21 तक है मेरे पास educational level of the participants. Now it is suggested, this is not the n number of these labels you cannot continue. You need to categorize them into the limited categories. इसमें क्या हो सकता है? You can say the up to the 8th class एक कैटेगरी हो गई, दूसरा up to the 12th class हो गई, तीसरा you can say up to the 14th हो गया,
एंड फिफ्थ, 15th एंड अबव, बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उनको आप एंड अबव में डाल दीजिए। नाउ आउट ऑफ 10 or 11 categories, you are going to have only 4 categories. And this information will be meaningful in many ways. Or you can say up to the 14 भी रख लीजिए, 16th and above कर दीजिए, 6th, 5th, 14th से 15th हमने ले लिया एक ग्रुप में, एंड नेक्स्ट है 16th and above। अब देखिए इस डेटा को कैसे आप कैटेगराइज करेंगे। ओके, नाउ बैक टू द डेटा, वी हैव ट्रांसफॉर्म, एजुकेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और यू कैन राइट द नेम ऑल्सो, एजुकेशन कोडेड। यहाँ देखिए सोर्स वेरिएबल ये आ गया बाय डिफॉल्ट, यू कैन चेंज इट, हमारा इंटरेस्ट इसी को कोड करने का है। यूजिंग ट्रांसफॉर्म, अगर पहले ऑलरेडी आपने ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ किया है तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे नया करना है ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, क्लिक दिस, फाइन। अब देखिए ट्रांसफॉर्म 1, आप इसमें लिख सकते हैं कोड एजुकेशन, ट्रांसफॉर्म ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, एजुकेशन कैटेगराइज इन 5 कैटेगरीज। आपको याद रहेगा कि आपने किया क्या था, 5 कैटेगरीज। अब नया वेरिएबल आपका ये क्रिएट होगा। अब देखिए ऐड रिकॉर्ड कंडीशन, आपने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गई आपका सीन। इफ, अब देखिए इसको क्लिक करेंगे, बीच में 2 सर्कल्स हैं, तो आपको इतने ऑपरेटर्स मिल रहे हैं। डबल इक्वल टू के लिए आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू, अपना कर्सर होवर करिए, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, एंड दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो पहला कंडीशन हमारी क्या थी, इक्वल टू 8th, इसको आप 1 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइए आप, ओके, नेक्स्ट आप लाएंगे लेस देन 15, यहाँ पे 15 आपने टाइप कर दिया, इसको 2 कर दीजिए। नेक्स्ट लाइए, कर्सर लाइए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 16th। अब इसमें सारे आपका डेटा सेट आ गया, इक्वल टू 3 कर दीजिए। मैंने 3 कैटेगरीज में पूरा डेटा आपका डिवाइड कर दिया, या एल्स भी कर सकते हैं। अगर यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नहीं जोता, मैं सिर्फ लेस देन कर देता हूं 16, लेस देन 3 हो गया, और एल्स जो है वो 4 हो गया। जो बाकी और वैल्यूज बनती हैं वो 4 हो जाएंगी। बस एंटर कर दीजिए। आपने एंटर किया और आप डेटा, इसमें डेटा में देखिए आप, एजुकेशन देखिए, ये आपका देखिए कोड होकर आ गया डेटा पूरा। अब ये बहुत आसान रहेगा। नाउ इट इज वंडरफुल इंफॉर्मेशन, you can have so many comparisons using this variable। जैसा हमने पहले सीखा है, आप डबल क्लिक इसे करिए, इस नहीं, गो टू द वेरिएबल्स में आप जाइए, और यहाँ पे देखिए हमने वेरिएबल का नाम दिया है एजुकेशन कोड, ये है देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, नेम यहाँ पे आ गया, फाइन। गो टू द
Go to the data. ये पूरा डेटा आपके सामने आ गया. एजुकेशन, सारी चीजें आपके सामने हैं. इफ यू आर विलिंग टू गो टू द वेरिएबल्स, आपके सामने पूरा डिटेल इसका है. सो ये अब देखिए, अगर इफ आई एम प्लानिंग टू थिंक फॉर द एनालिसिस मुझे क्रॉस टैब करना है. मान लीजिए I need to go to frequencies and cross tab, और यहाँ पर मैंने जेंडर रखा और यहाँ पे एजुकेशन कोड रखा. Now see, this information is more enriching to me comparing to the earlier tables. Education code and gender proportion. Fine. इस तरह से चीजों को अगर आप टेकअप करेंगे, पूरा आउटपुट मैंने हटा दिया यहाँ से. यू कैन रिमूव द कंप्लीट आउटपुट. And again, if you are willing to go for this frequencies, chi-square, and this gender and education code, fine. This is the table. Now coming to the expected count also. देखिए ये expected values भी आ गई. और आप proportions लेना चाहते हैं तो आपको इस तरह से डेटा. नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ. दैट्स, आई एम सॉरी, दिस नॉट द राइट. हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इंडिपेंडेंट सैंपल्स. एक्चुअली मैं थोड़ा गलत था. सिलेक्ट द जेंडर ओवर हियर, कोड यहाँ पर. देखिए अब आपकी खूबसूरत टेबल आपकी बन जाती है. ये एजुकेशन कोड हो गया और ये आपका जेंडर हो गया. इस तरह से अब ज्यादा मीनिंगफुल ये टेबल है. फाइन. बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं. स्टैटिस्टिक्स देखिए, बहुत सारे डेटा कल हमने आपसे कहा था. सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी ले सकते हैं. पोस्ट हॉक टेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं. एंड प्लॉट्स भी बहुत सारे यहाँ पे कर सकते हैं जो हमने पिछली क्लास में लिया था. एंड वन मोर प्लॉट जो मैंने आपसे शेयर किया था फ्रेंड्स, इफ यू आर, जब कॉरिलेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो वो भी बताऊंगा, लेकिन राइट नाउ वी कैन चेक इट, क्योंकि आज का डिस्कशन था हाउ टू प्रिपेयर द स्कैटर प्लॉट. तो यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे एक्सप्लोरेशन किया तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है. आप इसे लाइए. स्कैटर प्लॉट मैं किसके बीच में एग्जामिन करना चाह रहा हूँ? बिगनिंग सैलरी एंड करंट सैलरी. तो यहाँ पे देखिए, आई विल सिलेक्ट एट द एक्स एक्सिस बिगनिंग सैलरी, एट द वाई एक्सिस द करंट सैलरी, और नाउ सी द प्लॉट. नाउ सी, दिस इज द स्कैटर प्लॉट. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी सम लाइन, लीनियर लाइन, देखिए अगर ये परफेक्टली कोरिलेशन होता दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो most of the points will be lying in or around this line. अब देखिए, this is the outlier जिसकी बिगनिंग सैलरी 80,000 प्लस है. ज्यादातर अगर आपका देखें अराउंड 45,000 आपकी पॉपुलेशन में डेटा सेट है. सो दीज 3 पॉइंट्स आर द आउटलायर. इन्हीं की वजह से आपकी बहुत सारा इशू आ सकते हैं आपके एनालिसिस में. स्मूथ देखिए पैटर्न. अब देखिए जिस तरह से उसने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट किया, ये एसपीएसएस में पॉसिबल नहीं है. डेंसिटीज देखिए, देखिए किस तरह से डेटा को प्लॉट किया गया है. बॉक्स प्लॉट देखिए, देखिए जो आउटलायर्स हैं दे आर गाइडिंग यू. और जब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में हम कोरिलेशन देखेंगे तब आपको लगेगा कि यस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वैल्यूज आर क्लोज टू द लाइन, सो इट इज अ वेरी गुड कोरिलेशन, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेशन. अच्छा देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है.
If x is increasing, so as the y is also increasing. तो देखिए प्लॉट आपका ऐसा बन जाता है। कोरिलेशन के बारे में मैंने बात डिटेल करनी है, सिर्फ स्कैटर प्लॉट के बारे में लाना था। आप यहां से करिए, आप इसे कॉपी कर सकते हैं एंड गो टू द वर्ड्स। बहुत सारे बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे प्लॉट्स होते हैं जो कि दूसरे एप्लीकेशंस में नहीं है। देखिए ये सारी चीजें बहुत ही हैंडी हैं जो कि आपको बहुत मदद कर सकती हैं आपको एनालिसिस में। एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे यही सारी चीजें बतानी थी, और एक दो चीजें और देख सकते हैं हम, अभी वक्त है। आई विल एड्रेस योर क्वेश्चंस टुडे। आज कुछ थोड़ा सा 5 मिनट और रुकेंगे। इफ यू गो टू द डेटा एंड वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्म, मैं यहाँ से आउटपुट को रिमूव कर देता हूँ। कम गार्बेज इनकी कोई वजह नहीं है, हम नहीं रखना चाहिए इस सारी चीजों को। सिलेक्ट ऑल, क्लियर ऑल, ठीक है, इसे रहने Excuse, excuse me. दीजिए। Good जी afternoon, sir. I'm Dr. Rachna from Sri Balaji University, Pune. Sir, what is my query that I have downloaded the latest version, but I'm not able to see the SCM feature by in a you will see n number of features that you need to include them. I will demonstrate you, please do not worry. मेरे यहाँ भी यहाँ तक है, आपको फैक्टर तक दिखाई दे रहा होगा बस। Yes, sir. that I will help you. Allow me to stay back. आप देख लेंगे सारा। Oh, मैं great. कल बता दूंगा डेफिनेटली आपको। आज मैंने जो प्लान किया वो चीज मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। Sure. Thank you, sir. आप और भी बहुत सारे इसमें एड ऑन्स हैं जो कि आप देखेंगे। इफ यू गो टू द एडिट, एनीवे आज मैं इस पे एड्रेस नहीं करना चाहूंगा। तो Okay. आगे देखते हैं। इसमें मैं ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा था। देखिए ट्रांसफॉर्म में अगर हम इसको ले आते हैं, इस वेरिएबल को लाते हैं, कहने का मतलब है बिगनिंग सैलरी। मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बिगनिंग सैलरी आ गया, और ट्रांसफॉर्म को क्लिक करता हूँ। अब नाउ बिगनिंग सैलरी, ये नया वेरिएबल क्रिएट हो गया 2 करके। फाइन, नाउ यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, और मैंने देखिए इसको फंक्शन को क्लिक किया, पहले ऐड किया, ऐड के बाद फंक्शन को किया, और फंक्शंस देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। z, आई एम इंटरेस्टेड इन z, समझे। यहाँ पे आने से पहले वन मोर पॉइंट आई विश टू एड ऑन। लेट मी दिस, no, I will not work over here. Let me convert the data into the computer. This salary beginning, compute, salary beginning and compute, ये नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। सैलरी बिगनिंग compute z, फंक्शन मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि फॉर्मूला देखिए मुझे मिलना चाहिए। यस, z, ये क्या है? आई एम ट्राइंग टू कंप्यूट द z scores, and the formula of the z score is raw score minus mean divided by standard deviation. अब देखिए सारी वैल्यूज को ये z स्कोर में कन्वर्ट कर देगा। अब नाउ आई नीड टू सिलेक्ट द वेरिएबल। किस वेरिएबल का? बिगनिंग सैलरी, मैंने डबल क्लिक किया, बस नाउ इट्स रेडी। और जैसे ही आप साइड में कहीं भी क्लिक करेंगे या एंटर करेंगे, it will compute you the z score value. Now see, these are the all z scores values. Anybody can help me? What is the characteristic of a z score? Z scores are the standard scores. उसकी characteristics क्या होती है? And the characteristics of the z score is mean is 0 and standard deviation is 1. How to check it? Go to the this क्या नाम है, exploration, analysis, exploration, go to the descriptive statistics and compute
मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंप्यूट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, सिर्फ ये दो चीजें लेनी है। तो सैलरी मैंने जो वेरिएबल कंप्यूट किया जेड वाला, देखिए सैलरी कंप्यूट जेड, मैंने इसको लाया इधर। नाउ सी द स्टैटिस्टिक्स, डेसिमल प्लेस के 15 तक जीरो जा रहा है, 0.00000, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1। So you can compute and transform any of the variable। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है। अब देखिए और आगे खेलिए, टेस्ट डेवलपमेंट में हम बहुत ज्यादा ये काम करते हैं, बहुत ज्यादा इस काम की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अलाउ करें, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, 2 मिनट्स मोर मैं आपके लूंगा। टेस्ट डेवलपमेंट में मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, और नंबर मोर देन 30 टेस्ट तो हम यहाँ पे डेवलप कर चुके हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक टेस्ट डेवलप करके पब्लिकेशन के लिए भेजा है, तो मैं उसका अगर आपको मैनुअल आपसे शेयर करूं तो देखिए, ये जो मैं आपको जेड स्कोर की बात करना चाह रहा था, ये नॉर्म्स देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। You need to convert your scores into the comparable scores। एक्चुअली ह्यूमैनिटीज में जो रॉ स्कोर्स होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। You need to convert them into the unit full score, like standard score, normalized T-scores, stanine, stans, percentiles। तो देखिए हमने इस तरह से कन्वर्ट किया। अब यहाँ के बाद जो बहुत मीनिंगफुल टेबल इसमें आती है वो देखिए ये आती है, जिन लोगों का जेड स्कोर की वैल्यू 2 प्लस प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, दे आर हैविंग ओवर राइडिंग कंपीटिंग ऑब्लिगेशन। एक्चुअली ये स्टडी की थी मैंने, कंपीटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। कोविड के दौरान की ये स्टडी थी, कंटेजियस डिजीज में लोग, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ कैसा काम करता है। तो अब जो मैंने जेड स्कोर में कन्वर्ट किया, अब उसको कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं टू मेक इट मीनिंगफुल, लोगों को पता चले कि इस स्कोर का क्या मतलब है। सिंपली इट इज ए स्कोर, लेकिन व्हेन यू कन्वर्ट दिस स्कोर इनटू द लेबल्स, देन इट विल बी द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, कि अगर मेरा जेड स्कोर की वैल्यू ये आ रही है तो मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। So this is very important for the comparison purpose within the subjects and between the subjects also. So ये वाली knowledge देखिए, आप सभी लोग familiar हैं। we were having this Z score and plus minus 1 sigma से चीजें होती हैं, plus minus 1 sigma 68%, plus minus 2 sigma 95%, plus minus 3 sigma 99%। So 99.73% प्लस माइनस 3 सिग्मा। सो ये प्लॉट आपको मदद करेगा। आप सभी फेमिलियर हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में भी। अगर मैं देखूं, आप देखें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, then you will see this plot is very important for making the decisions like this। See, all the values are on a platform plus minus 2 sigma, इस तरह से। See, ह्यूमैनिटीज में, बिजनेस में, बहुत सारे कैरियर्स में हम इसी बेस पर डिसीजन लेते हैं। मेजोरिटी इज इन और अराउंड प्लस माइनस 1 सिग्मा। 50% लोग, 68% यहाँ होते हैं। राइट साइड एक्सलेंट परफॉर्मेंस and left side poor performance। So these are the approaches that you can use various ट्रांसफॉर्मेशंस, और भी बहुत सारी अनलिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अगर नहीं है तो यू कैन यूज द फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू कंप्यूट नॉर्मलाइज टी स्कोर, उसकी रेंज 1 से 100 के बीच में होती है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला 50 + 10 into Z स्कोर
नॉर्मलाइज टी स्कोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका मीन 50 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 होता है। इंडियन रेलवेज में वी वर यूजिंग नॉर्मलाइज टी स्कोर फॉर डिसाइडिंग द सुटेबिलिटी ऑफ ए पर्सन फॉर द जॉब। ये सारी चीजें आज मैंने प्लान किया था। होपफुली कल से हम बहुत अब सीरियस डिस्कशन की तरफ चलेंगे। वी विल बी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करेंगे। बहुत सारे टेस्ट को डिस्कस करेंगे एंड आई होप दिस फाउंडेशन विल हेल्प यू। और लेट मी स्टॉप द शेयरिंग देन यस नाउ आई एम ओपन फॉर योर क्वेश्चंस। प्लीज आप बात किया करें। मेरी नीड है कि जब बात नहीं होती है तो मुझे थोड़ा सा पता लगता है कि शायद एज ए टीचर आई एम स्पीकिंग एंड आई एम नॉट एट योर एक्सपेक्टेशंस। प्लीज बाय। Sir, am I audible? आज हम थोड़ा सा फ्री हैं, कहने का मतलब है इंगेज नहीं है, देन वी कैन टॉक यू। इट इज अप टू यू कि आप जितना देर चाहें मुझे बैठा सकते हैं आज। Sir, हालांकि am I लंच audible? लंच 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 अभी नहीं मिला है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय डिपार्टमेंट चैम्बर। सो बताइए प्लीज क्वेश्चन। जी Hello, sir. Am I audible? जी Yes, जी ma'am, मैम। you You are are audible. audible. Okay. Sir, I saw the graphs. They're really good. But can I add data labels to the graphs generated by JAMOVI, sir? Yes, you can. Why can't you? We are using n number of graphs. ग्राफ्स का पैटर्न वही है लेकिन उनका डिजाइनिंग डिफरेंट है। मैंने तो बहुत सारे आर्टिकल्स में, कई थीसिस में उसको यूज किया है। देखिए हम यहाँ थोड़ा सा इथिकल अनएथिकल के चक्कर में पड़ रहे हैं। 40% courses are being pushed by the UGC online. स्वयं या जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर अलाउइंग टू गो फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER। तो हम यहाँ पे मेरी मेरी अभी कल नीपा में टॉक है। नीपा इज द नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। बस 1 मिनट का मुझे मौका दीजिए। और यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अलाउइंग यू टू गो फॉर द ओपन वेयर्स, क्योंकि हर एक के पास पॉसिबिलिटी नहीं है, न चांसेस हैं कि वो आपका आपको कॉस्टली एप्लीकेशंस। माई स्क्रीन कहाँ गया? लेट मी चेक। तो ये डाउट दिमाग से निकाल दीजिए प्लीज। एक Sir, एक मिनट actually, I think I was not clear with my एक मिनट का question. वक्त दीजिए। मैं अभी मेरे देखिए दिस इज द टॉक दैट आई विल बी डिलीवरिंग टुमारो अबाउट ओपन वेयर। ओपन वेयर्स की ब्यूटी ये है, दे आर लाइसेंस फ्री। They are having the creative common licenses and you are not being challenged at any point of time कि आपने इसको क्यों यूज किया और who authorized you। लेकिन बाकी चीजों को आप करेंगे तो you may be in trouble। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इन चीजों में न पड़ें और आप आउटराइटली डिक्लेयर करिए दिस इज ए ओपन वेयर। और देखिए आप वंडरफुल, देखिए मैं इसी मामले में कल मेरा 3 घंटे का सेशन है। सब इसी पे, सारी कहानियां इसी पे चल रही है, ओपन एजुकेशन, ओपन वेयर। और अब हम वही पड़े हुए हैं कि सब दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट वाई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इस स्लाइड का जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट आई डिस्कस्ड अबाउट द माइंड मैप। प्लीज हैव द स्क्रीनशॉट। ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था, हाउ टू क्रिएट द माइंड मैप। देखिए ये सारे ओपन वेयर एप्लीकेशंस हैं। MIT कितना बड़ा काम कर रहा है टू गिव यू द ओपन वेयर्स। और हम वहीं पड़े हुए हैं कि सब वी कैन नॉट यूज दिस इज एथिकल अनएथिकल। देखिए JAMOVI को मैंने डिस्कस कर रहा हूँ इसी में कि इट इज यूजफुल फॉर डेटा एनालिसिस एंड सो मेनी थिंग्स। फाइन, सॉरी, you need to ask and I need to clarify, but again it is you to take the decision। Sir, actually, my question was in the graphs. When we हाँ हाँ, right click on जैस्प Excel देखिए graph. जैस्प के ग्राफ्स बहुत यूज कर रहे हैं लोग, बहुत सारे ओपन वेयर्स यूज कर रहे हैं। अगेन इट इज ए फ्री वेयर, यू कैन यूज इट। Sir, when we right click on Excel graph, we can add data labels. That means each bar chart will tell us how much count is there in that particular bar. So Yes, I you can want to have know. it. Okay. Perhaps a JAMOVI will also help you to show the labels। Okay, sir. I Thank will you. discuss you tomorrow।
और बताएं मैम प्लीज। Thank you so much for the enriching session, sir. I invite Tanuja ma'am for the vote of thanks. Thank you, I ma'am. request you please ask the questions, else मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फीडबैक बहुत जरूरी है। कलेक्टिवली तो आप फीडबैक देंगे अपने ऑर्गेनाइजर्स को, जो कि मुझसे शेयर नहीं की जाएगी, लेकिन मुझे डेली बेसिस पे कुछ तो पता न चलना चाहिए कि मैं am I moving in the right direction, और बस यही बात हो रही है। When we are engaged, when we are in a bond, really it matters. इबा मैम आप बोलिए कि फीडबैक नहीं दे रहे हैं लोग। Participants, if you have any questions, you can ask. It's open now. You are going in detail, sir. So maybe the participant is not having any other questions. That's why. I want All to the re- things. I want to reinforce what Ipa ma'am said, sir. The Thank you, way- sir. Thank you. The way it is Yeah, being teachers, explained. you know कि जब तक पता न चले how I am moving, तो तब तक अच्छा नहीं लगता है सर। हाँ जी सर। और इसलिए वीडियो भी सर- इसका, आपका जो भी लेक्चर हो रहा है उसका वीडियो भी बना रहे हैं हम, सर। रिकॉर्ड भी हो रहा है। शायद वो भी हम लिंक करके We have shared, sir. 2 days yeah, already we have shared. In YouTube, yeah, we have. so YouTube, yes sir, yes sir, I have so seen. it will be much more easier for the participants to go True, back. sir. वापस जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसका Fine, Thank you, Vijay sir. sir, thank you so much. Thank you Thank you, for sir. the feedback, sir. Thank you, sir. जी मैम। So, on behalf of Department of Commerce, UG, Kristu Jayanti College, I take this opportunity to propose vote of thanks for our esteemed resource person, Professor S.M. Khan, for a wonderful session on research. I also take this opportunity to thank our Head Department of Commerce, Dr. Vijay Kumar R, and all other participants from various institutions and the faculty members of Kristu Jayanti College. Sir, we are really honored and grateful to have you here. Your session is really wonderful. You are taking, like, it feels like we are sitting in a classroom and listening to you. Thank you so much for your time. Thank you so much. इबा मैम कल सुबह Yes, के sir. लिए आप मैसेज दे दीजिए प्लीज। Yes. Tomorrow morning, the session will be preponed because of sir engagement. Sir is having another session at that particular point of time. So tomorrow morning, 8:30 to 9:30, we will be having this FDP. Now very serious and important discussions are to come, so I request all the participants please stay back. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you so Thank much. you. Thank you.